Hello and welcome back to Chasing the Target. It's Sri Lanka versus Australia. श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं. उनका बैटिंग करने का फैसला है. खुशाल मेंडिस is the stand-in captain. Shanaka has gone. He is no longer captain Sri Lanka because of injury. दो changes है श्रीलंका के लिए. अगर आप देखें Kumara and Karun Naratne come in for Shanaka and Patirana. ये दो changes है श्रीलंका के लिए. ऑस्ट्रेलिया अनचेंज टीम है. They're backing the same side जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले. ये पिच अगर आप देखें सिमिलर टू द वन जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, और उसमें अगर आप देखें बैटिंग फर्स्ट इट वाज अ बिट इजियर. अंडर लाइट्स बॉल हिल रही थी, इट वाज स्विंगिंग. दैट्स व्हाई पैट कमिंस सेड आई वुड हैव आल्सो बैटेड फर्स्ट. अब देखना पड़ेगा श्रीलंका कितने रन्स बनाए. अगर 250 के ऊपर बनाए तो फिर चैलेंजिंग चेस हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए. ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जरूरी है डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ये बड़े खिलाड़ी उनके फॉर्म में वापस आए. दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. उन लोग हर ग्राउंड में खेल चुके हैं, हर कंडीशंस में खेल चुके हैं, हर टूर्नामेंट में खेल चुके हैं. तो उन लोगों को रन बनाना आज बहुत जरूरी है. एंड देन बॉलिंग वाइज देखो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड, तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है. मगर यही है कि थोड़ा दे लुकिंग अ बिट टायर्ड, अ बिट मोर फटीग्ड. उन लोग 3 फॉर्मेट खेलते हैं और ये फॉर्मेट में इंडियन कंडीशंस में सो फार दे हैव नॉट लुक्ड एज इफेक्टिव. ठीक है, इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा स्टार्ट था, but then they couldn't build from it. Zampa के भी विकेट्स आना बहुत जरूरी है. The other problem that Australia have, second spinner है नहीं उनके पास. तो ये उनको मसला हो सकता, if not in this game, आगे जाके वर्ल्ड कप में. और यही प्रॉब्लम चलते जा रहा है उन लोग के पास. They don't have a second spinner. अगर एशन एगार फिट नहीं था तो they should have probably gone for Nathan Lyon, because इंडियन कंडीशंस में आप देख सकते हैं कल जो अफगानिस्तान 3 स्पिनर खिलाए, इंडिया भी जो 2 स्पिनर खिला रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 खिला रहे हैं, पूरे इफेक्टिव हैं. तो दे नीड एन एक्स्ट्रा स्पिनर. जैम्पा पे वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, मगर एक पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, खास तौर पे ये कंडीशंस में. मेरे हिसाब से श्रीलंका देखो वो लोग उनकी बैटिंग सो फार हैज बीन गुड इन दिस टूर्नामेंट. बॉलिंग का मसला हो रहा है उनको. 400 खा लिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ और फिर 340 उन लोग डिफेंड नहीं कर सके पाकिस्तान के खिलाफ. तो बॉलिंग वाइज श्रीलंका में भी लहरू कुमारा कमिंग इन, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू पतिराना. ये उनको हेल्प हो सकता. तीक्षणा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, बिकॉज आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ही कैन पुट प्रेशर स्पेशली सेकंड इनिंग्स में. एंड मधुशंका अंडर लाइट्स कुड बी अ हैंडफुल, ही कुड बी डेंजरस. बट श्रीलंका फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू गेट टू अ गुड कंपेटिटिव स्कोर. 300 के आसपास, मतलब आप 270 280 पी विल बी वेरी कंपेटिटिव आई थिंक ऑन दिस पिच. जैसा नासिर हुसैन बोला पिच रिपोर्ट के, इट्स सिमिलर टू द वन दैट साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया प्लेड. तो उस हिसाब से आई थिंक श्रीलंका हैव अ स्लाइट एडवांटेज, लेकिन दे हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. उनको बैटिंग करना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलिया क्या है, they have to take their catches भाई. साउथ अफ्रीका के खिलाफ they dropped so many catches, इसलिए वो स्कोर 300 हो गया. they could have maybe restricted South Africa 260 250, लेकिन they dropped too many catches. आज they have to take all their catches. I'm sure अब उन लोग लखनऊ में हैं 5-6 दिन से, तो they're more acclimatized to these conditions, and I think that they have an advantage going into this game. I'm tipping Australia, लेकिन with the toss, Sri Lanka are batting first, so it won't be easy for Australia. मुश्किल रहेगा उन लोगों के लिए. It will be a tough प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर. अगर मैं देखा श्रीलंका की तरफ से कुशाल मेंडिस ही जाऊंगा, वो खतरनाक फॉर्म में अभी. पाकिस्तान के खिलाफ जो इनिंग्स खेला उन्हें, और इन लोग साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, ही इज लुकिंग इन वेरी वेरी गुड टच कुशाल मेंडिस. सो आई एम पिकिंग हिम. एंड देन फ्रॉम द बॉलर्स आई प्रोबेबली go, I mean Kumara is a good shout, he's coming in, but I'll go with Tikshana. ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से with the ball I'll go with Mitchell Starc. He's somebody particularly against Asian teams, he's done well in the past, but these conditions are different. But अगर उसको थोड़ा सा रिवर्स मिल गया, थोड़ा सा स्विंग मिल गया, तो he can be very dangerous. Mitchell Starc जाऊंगा. और बैट के साथ I'll go David Warner भाई. He needs to get runs. David Warner, आप ऊपर से runs आएंगे तो बहुत confidence आएगा पूरी टीम को. मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो है उन लोग से भी प्रेशर कम होगा. तो वार्नर को मारना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से. He has to come in, get them off to a flyer, get them off to a very good start and convert that during the chase, because देखो प्रेशर तो रहेगा. पर्टिकुलरली अगर श्रीलंका 250 के ऊपर मार दिया तो ऑस्ट्रेलिया पे दबाव होगा. और उस हिसाब से आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, इन लोगों को स्टैंड अप करके स्कोर करना पड़ेगा रन. इट्स सिंपल एज दैट. तो वार्नर है मेरा दूसरा जो फैंटेसी पिक है ऑस्ट्रेलिया से. तो वार्नर, स्टार्क, मेंडेज श्रीलंका से, और मैं जाऊंगा तीक्षणा श्रीलंका से. तो दिस इज द सीन गोइंग इनटू द गेम. अगेन लाइक आई सेड, ऑस्ट्रेलिया ये कंडीशंस एक्लेमेटाइज हो गए तो उनको एडवांटेज है, लेकिन दे विल बी चेसिंग. और आपको पता है अंडर लाइट्स थोड़ा सा मुश्किल है. अगर वो कैचेस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर लिया श्रीलंका को अच्छे टोटल को, तो फिर उन लोग चेस डाउन कर सकते हैं. ये
देखना पड़ेगा। कल तो भाई क्या अपसेट था, कल तो मैं समझ में नहीं आया मेरे को। इंग्लैंड टॉस भी जीती, बॉलिंग करे, ड्यू भी आई सब आया, मगर जो अफगानिस्तान बॉलिंग करे भाई, इनक्रेडिबल टॉप नॉच बॉलिंग था वो, एंड वो बहुत बड़ा अपसेट था। ये वर्ल्ड कप का बिगेस्ट अपसेट सो फार एंड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक गेम्स इन वर्ल्ड कप क्रिकेट, कल का जो मैच था। तो आज देखेंगे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, श्रीलंका जीती तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड काइंड ऑफ एन अपसेट। लेकिन ये कंडीशंस में श्रीलंका शुड बी कॉन्फिडेंट, यू नो दिस शुड बी कम्पिटिटिव। आप देखें उन लोग, उनकी बैटिंग एक्चुअली अच्छी चल रही है, लेकिन वहां पे बॉलिंग फील्डिंग में उन लोगों को वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और वो सेकंड इनिंग्स में देखना पड़ेगा वो कैसा आफ्टर रहेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए गेम आसान बिल्कुल ही नहीं होगा, नॉट ओनली बिकॉज देयर फॉर्म इज नॉट गुड, बट श्रीलंका आल्सो आर अ डिसेंट टीम स्पेशली इन दीज कंडीशंस। तो उन लोग को देख के रहना पड़ेगा, दे विल हैव टू प्ले वेरी वेल टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड मेक श्योर देयर इज नो रूम फॉर एरर, स्पेशली फील्ड में। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का ये भी है कि भाई ऑलराउंडर्स बहुत है। आप बोल सकते हैं T20 क्रिकेट में इट्स अ ग्रेट थिंग, वनडे क्रिकेट में भी यू नो वी वर थिंकिंग कि बहुत जबरदस्त, दे हैव अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स, लेकिन they are struggling, whether it's Maxwell, Stoinis, Mitchell Marsh, ये तीन उनके ऑलराउंडर हैं, उन लोग बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, और जब फॉर्म में नहीं रहते इट लुक्स लाइक कि भाई एक्स्ट्रा बैटर को खिला देना था या वैसा। तो ये जो तीन प्लेयर है इनका फॉर्म भी आना बहुत जरूरी है, बोथ विद बैट एंड बॉल, बिकॉज इन लोग पे बैंक कर रहे हैं तीन आपके जो ऑलराउंडर्स है, दे एक्चुअली अ वाइटल पार्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप टू, बिकॉज लैबुशेन के बाद यही आते हैं राइट, मैक्सवेल, स्टोइनिस और मिचेल मार्श तो ओपनिंग कर रहा है। सो यू हैव थ्री ऑलराउंडर्स बैटिंग इन द टॉप 6 टॉप 7 ऑफ योर लाइनअप, then you need them to perform, you have to count them as batters, especially you know when they are batting, because आपके पास ऐसा नहीं है कि एक ऑलराउंडर है जैसा इंडिया में हार्दिक पांड्या यू नो एंड जडेजा, एक दो, ऐसा नहीं, दे हैव लाइक 3-4 who play in the top order itself, so they have to come out and perform, score runs। अब लोग इन लोग बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, ये भी मसला हो सकता है, whether they're having problems with these conditions or what it is, I'm not exactly sure, लेकिन इन लोगों को परफॉर्म करना बहुत जरूरी रहेगा ये जो तीन ऑलराउंडर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए, because if they get into form उनका स्ट्राइक रेट तो जबरदस्त रहने वाला है, and they will put pressure back on the opposition because they play their shots, free क्रिकेट खेलेंगे उन लोग। तो अगर इन लोग रन्स बना सकते, गेट रन्स अंडर देयर बेल्ट, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। एंड आल्सो ऑफ कोर्स डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ये दो बैटर्स को रन मारना बहुत जरूरी है। यू नो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, इन लोग ये कंडीशंस में बहुत बार खेल चुके हैं। वार्नर तो मिस्टर IPL है, ही इज प्लेड इन एवरी ग्राउंड हियर इन इंडिया, ही अंडरस्टैंड्स द पिचेस। तो उसको रन बनाने नॉट ओनली इज इट इंपॉर्टेंट फॉर हिम बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द टीम, बिकॉज वो प्रेशर पे निकलता है, मिडिल ऑर्डर से वो दबाव निकलता है, एंड अगर उसने यू नो पहले 10 ओवर में 50 मार दी, 60 मार दी of like 40-50 balls, then it just puts Australia in a good sense of rhythm. And Sri Lanka, Kusal Mendes is in outstanding form right now. He will look to attack on a power play, he'll look to score runs, put pressure on Australia. He's been in sensational form. Leg side पे तो उन्हें आपको punish कर देंगे, off side के उसके बीच शॉट से कवर के ऊपर पॉइंट के थ्रू बहुत खतरनाक शॉट्स खेल रहा है कुसाल मेंडेस। एंड देन आई थिंक जो लोअर ऑर्डर है वो भी अगर अच्छा सा फिनिश करें तो फिर रन्स आएंगे होंगे। श्रीलंका यही प्रॉब्लम है, बॉलिंग उनका इशू है ज्यादातर, जैसा ऑस्ट्रेलिया बैट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जो ये टीम है श्रीलंका उन लोग बॉल के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं एंड फील्डिंग टू। तो अभी with Patirana setting out, Kumara comes in, he's a bit more experienced. I think he can use his conditions, especially under lights, वो ball move करा सकता है। and आपके पास फिर तीक्षणा है जो lethal spinner हो सकता है। Madhushankar has also done well in these conditions, so they have the bowling, but they'll need to improve their bowling performance, because ये Australian team के खिलाफ even if they're not in form, you can't afford errors। आप पिछले 2 मैच देखे, उनका लाइन लेंथ बराबर नहीं था, श्रीलंका का काफी रन्स खाए। ये पिच अलग रहेगा, अंडर लाइट्स रहेगा, इट विल बी डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन फिर भी they will have to focus in that areas, they can't let it slip। bowling तो improve करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब देखते हैं क्या होता। I think it's honestly a 50-50 game right now, particularly with Sri Lanka winning the toss. But Australia, like I said, they will be raring to go. They want to make a comeback. देखो उनकी जो 2 मैच हारे, ऐसा नहीं है कि they it wasn't like they lost like England to Afghanistan. I think that they lost to India and South Africa, 2 of the top teams right now in the World Cup. So Australia still have a chance. Now it's about coming back. They have a strong mentality, and they will be raring to go. They are acclimatized to these conditions, whereas Sri Lanka, they have been playing well, but with the ball, that's where they need to improve. So I think go either way. All we know is that someone will break their
winning streak and someone will continue the losing streak today. तो यही होगा और हम लोग आपसे मिलेंगे फिर मिड इनिंग्स में, फिर उसके बाद पोस्ट मैच में. मेक श्योर आप हिट करो लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, और कंटेंट आएंगे चेसिंग द टारगेट पे. आप देख सकते हैं व्लॉग्स भी आएंगे अहमदाबाद के, फिर शॉर्ट्स भी है, काफी चीजें हैं. तो आप लोग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन. ये गेम एंजॉय करो आप. होपफुली वी गेट टू सी अ क्लोज गेम. अभी वो सुपर ओवर टाइप गेम अभी तक आया नहीं वर्ल्ड कप में, तो होपफुली आज कुछ खतरनाक मैच हो जाए, क्लोज मैच हो जाए. यही उम्मीद है. तो देखेंगे क्या होता फिर. बट यस, मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. आई विल कैच यू इन द मिड इनिंग्स एंड पोस्ट मैच. टेक केयर गाइस.